Good morning, everybody. So, this is YD sir again. It's some important thinkers of sociology which we need to study before the mains examination to make concrete points in your notes and to make your writing more effective and more marks fetching. So, let us discuss. In this series, we have discussed Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber, Mead, and R.K. Merton. So let us discuss A.R. Radcliffe Brown. So A.R. Radcliffe Brown was one of the disciples of famous sociologist Emile Durkheim, and Radcliffe Brown was born in England. He gave the powerful theories of three scientific methods of investigation. Now these are a series of positivists who are making their convention for the development of scientific investigation. So the three stages of scientific investigation undergoes observation, taxonomy, generalization. Observation, which Radcliffe Brown means the collection of data. So he's putting empirical research by putting the data in the research methodology. Secondly, he is classifying the data. What he is putting forth? Classification of data. So segregation of data into different parts is the classification. Third is the theoretical excursions. That means the estimation of theories which are present and their rechecking on the provable grounds whether they are being applicable to different parts of sociological research or not. So that are the factors of sociological research. Now, after putting this, he is believing in cross cultural comparisons and generalizations as estimated by the anthropologist. So, after French Revolution, these two subjects emerged simultaneously. Anthropology researches on the scientific study of dead things. It can be dead animals, bodies, or monuments in a very deep manner. So he believed that there is a connection with anthropology and sociology, and therefore he based his research on the anthropological factors which are remainings of the past in terms of dead bodies or dead things. He also provided natural science model of society which is unable to cope with the complexity of social life. He put a natural science process in which social life is very complex to be defined. Are you getting this? So in this way Radcliffe Brown becomes one of the important thinker, and now we see the details of his research. In 1948 he gave the concept of theoretical natural science of human society. He conceived that the human society is naturally built as a family. There is a mother, there is a father, there is a grandmother, there is a grandfather, there are children, and there is another family. In this way it form a community. So he is saying that the social phenomena are investigated by methods similar to those used in natural and biological sciences. Each of these sciences, जैसे कि natural और biological sciences में investigation हो रहे थे based on bodies, their working and functional view. So in the similar manner we can research over the society and how its natural and biological parts are working in the same way how family is working. Hmm? So he is taking his observation to the subjective version of natural science, and he is establishing the fact under investigation that structure of the universe as it is revealed to us through our senses. So natural science is estimating the structure of universe.
If this is universe compiled of different planets, then the natural sciences researching on these things. Similarly, the social science is also based on these senses, and each branch of science deals with a certain class and kind of structure. So each branch is dealing with certain structure की बात Radcliffe Brown यहाँ पे कर रहे हैं. So we see अब ये सोशलाइज कैसे होती हैं चीज़ें, इनका सामाजिकरण कैसे हो रहा है. So there is a family who is getting associated with the language acquisition, relationships, rules, morals, role models and behaviors of the family members. Then there are peers such as brother and sister whose behavior is also noticed, and there are relatives. तो रिलेटिव्स की भी बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है, उनके एक्टिविटीज़ को. देन कम्स द पार्ट ऑफ रिलीजन in which we see the values of religion is also taken into account. The worship, virtuous life, sagacity, karma, these things are learned by religion. Love for others, having a compassionate feeling and sentiment for all, meaning of life and guideline on how we live. These are all things in religion. There is also present in government laws, sense of security, sanctions of punishment. These are also provided through the society and which socialize people. Then comes the role of media, which refers to informations and informatory process, trends. Then it goes to works, employment, opportunity of job, money, rules and rules that make people interact with each other. So interaction lead to socialization. Ethnic background, people react on belief, values and custom and different ethnicity. Then comes the clubs and social groups. So people also interact via different kinds of clubs which they go for entertainment and recreational activities. So these are social interaction at the clubs and groups. And school, obviously, in which there is social setting and values. Then child comes to know the rules and socialization process, and these are the structures present in society which leads to socialization of people. So Radcliffe Brown is putting that the element is following two aspects with the social structure. First, all social relations of person to person, that is interpersonal relations. Relations are interpersonal in nature. When we see kinship structure of society, so caste और kinship होती है, इसमें कि marriage relations are there and which constitute a number of dyadic relations. So ये अब concept दे रहे हैं dyads and triads. So dyadic relations में kinship 1 and kinship 2, family 1, family 2, इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है सेम कास्ट के लोग के बीच जो कि एक साथ खाते हैं, एक साथ रहते हैं. और मैरिज, कॉन्सैंग्यूनिटी एंड सेलिब्रेशंस को एक साथ शेयर करते हैं. देन क्या होता है, देयर इज़ द डिफरेंशिएशन ऑफ इंडिविजुअल एंड क्लासेस बाय देयर सोशल रोल्स. डिफरेंशिएशन कैसे होता है इंडिविजुअल्स का, कि उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, समाज में वो क्या भाग निभा रहे हैं. ही इज़ अ सोशल चीफ, ही इज़ अ प्रधान, ही इज़ अ सिक्योरिटी पर्सन, और ही इज़ अ लॉयर, और ही इज़ अ डॉक्टर. सो रिलेशनशिप बिटवीन मेन एंड वुमेन, चीफ एंड कॉमनर्स, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़. सो ऐसे डायडिक रिलेशंस होते हैं. वन इज़ रूलर, वन इज़ बीइंग रूल्ड, जो कि आगे चल के कार्ल मार्क्स की क्लास और क्लास कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलती है.
So dyads, two are the basic parts. So then social anthropologists carry out this field work for a particular territorial defined society. What he actually investigates in his social structure and actually existing concrete reality to be directed, observed. सो ऐसी रियलिटी जो कि वास्तविकता में दिख रही है द्विस्तरीय रिलेशनशिप का. Many students are sitting at Rajendra Nagar or at Mukherjee Nagar or Allahabad, Patna. So there has been different relationship between the teacher and the student, then father and the daughter, then grandfather and the mother, and the coaching owner and the teacher. In this way, that is a dyadic. It means it is between the two, and therefore Radcliffe Brown observes that the social structure and the structural type or form is present. सोशल स्ट्रक्चर में क्या है, एक फॉर्म प्रेजेंट है ना. सो स्ट्रक्चर अलग है और सोशल फॉर्म अलग है. these are two different things. Social structure is also relating with each other, but type of form are different forms of it. So he put forward the natural science of society. He is quoting that the distinction from history or biography science is not concerned with the particular or unique. It is not particular, neither unique, but it is opposition relations with propositions that apply to entire phenomena. So it is a generalized version. Relation between father, son, father, mother is dyadic. और ये कैसा है? This generalized relation. Okay, so the form of structure की हम बात कर रहे हैं. तो ये कैसा फॉर्म है? ये डायडेटिक फॉर्म है. उसमें आगे चल के ट्राइटिक भी देखेंगे. So dyadic continuity is also conceptualized, in which he is saying that a kind of continuity in which there is a dynamic continuity. So the organism which are interacting with each other, mother and father, उनके offspring आए, children, child one, daughter, child two, son, उनकी भी मैरिज हुई, उनके दो ऑफस्प्रिंग. सो ऐसे करके ये डायनेमिक कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं. सो कंटिन्यूटी इज कंटिन्यूसली कीपिंग राइजिंग एंड it is in the form of ideographic to nomothetic. Ideography means pre-existing and nomothetic means in the nomothetic present scenario. So his former designates the special social structure, the latter is the structural form. It is ideographic is social structure and nomothetic is a form of structural or structural form. So इसे आप याद रखोगे. Now Radcliffe Brown says that there is a methodology of social anthropology, and that is the comparative method, and that is comparative idea which helps to move the particular to the general. So particular से general की तरफ आ रहा है ना, particular relation से general relation की तरफ बढ़ रहा है, and that is making a part of substantial life relations. That is the concept of dynamic continuity. Keep it in mind. Let us move ahead to another thinker at the instant, Herbert Spencer. Herbert Spencer क्या कह रहे हैं? Herbert Spencer is saying that there is social Darwinism. So Herbert Spencer कैसे हैं? One of the Darwinist proposition of disciple, ये Darwinist methodology में आ रहे हैं.
डार्विज्म क्या है? इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज। सो हम कैसे हैं अकॉर्डिंग टू डार्विन? वी वेयर creepers, then we move to monkey, then we move to man or male or female. So we have evolutionary background in 4 stages. So in the similar way, Herbert Spencer is saying that survival of the fittest is a form of the natural survival and existence of society. So any element of society will exist only when he is the fittest, male or female, because there is always a struggle for existence. संघर्ष चलते रहता है हमेशा, and this struggle is due to limited natural resources. अगर घास का मैदान है तो भी बहुत कम है. Water is also scarce. There is land which is also scarce. Cow is also scarcity. Fruits के trees भी scarce हैं. So scarcity के चलते there is continuous struggle between organism to having control over these resources, and that body or that organism which is the fittest, who will survive the most, that will only survive the last तक वही survive करेगा. And Spencer's book used as a college test and influenced top business leaders. कॉलेज टेक्स्ट के लिए इसे यूज़ किया जाता है, जिससे बहुत सारे बिजनेस पर्सन्स अपने इकोनॉमिक्स थ्योरीज में यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं. रॉबर बैरन्स 1900 में यूज़ किए थे. सो स्पेंसर क्या बोल रहे हैं? दैट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वीकर इंडिविजुअल विल बी एलिमिनेटेड एलिमिनेट बाय हिमसेल्फ, वो खुद ही एलिमिनेट हो जाएंगे. यूज टू जस्टिफाई वर्स्ट इम्पल्सेस ऑफ मैन, कि इंसान के अंदर बुरे इम्पल्सेस भी होते हैं, ड्यू टू विच दे वेंट फॉर वायलेंस, दे वेंट फॉर स्ट्रगल, एंड ड्यू टू विच दे प्रूव देयर स्ट्रेंथ ऑफ सर्वाइवल. इसको जस्टिफाई कर रहे हैं स्पेंसर कि मैन तभी सर्वाइव कर पा रहा है जब वो स्ट्रगल करने में कैपेबल है, एंड ही इज कैपेबल ऑफ establishing his personality. He inspired communism. कम्युनिज्म में कैसे होगा? क्लास और क्लास, कार्ल मार्क्स कह रहे हैं ना कि क्लास और क्लास स्ट्रगल के बाद एक कम्युनिस्ट सोसाइटी इस्टेब्लिश हो रही है जिसमें कि इक्विटेबल रिसोर्सेज का डिवीज़न है, दैट इज़ इगैलिटेरियनिज्म बेस्ड ऑन समानाधिकारवादी. सो ऐसे ही कम्युनिस्ट की ही तरह जो स्ट्रगल करके आगे निकलेंगे फिटेस्ट पर्सन्स, वो अपना ग्रुप बनाएंगे एंड अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी फैमिली और सोसाइटी के लिए दे विल वर्क टुगेदर, एंड ही रिजल्ट इन द एलिमिनेशन ऑफ गॉड एज ए क्रिएटर एंड जज ऑफ द सोसाइटी. वो गॉड के एग्जिस्टेंस को नकार रहे हैं और कह रहे हैं कि मैन इज हिज ओन क्रिएचर एंड मैन इज justifying his presence through his hard work, struggle, survival, and his constant fight with each other. So स्पेंसर के स्ट्रक्चर को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं. What structure does Spencer is giving? स्ट्रक्चर से क्या स्पेंसर दे रहे हैं? स्ट्रक्चर इज a Latin word from structure or construct. तो सोसाइटी में क्या कंस्ट्रक्ट हो रहा है? फैमिली, religion, norms, roles, power, hegemony, caste that is stratification, ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर में आ रही हैं. So he first applied to construction in the field of his own classical result in the field of biology. So Spencer says that analogy of building which we have to begin. So he says that analogies that were used in the formulative stage of sociology to comprehend the idea of society. The most frequent used analogy has been organisms.
सोसाइटी इज़ लाइक एन ऑर्गेनिज्म, पूरे सोसाइटी को ये एक कह रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म है। कैसे ऑर्गेनिज्म है? जो कि अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहा है, अपने पैर से चल रहा है ना। इसके अपने पीपल्स हैं, इसके अपने एक रोल है, इसकी अपनी एक हंगर है, सोसाइटी की एक नीड है। देयरफॉर देयर इज़ रिलीजन, देयरफॉर देयर इज़ मैरिज, देयरफॉर देयर इज़ अ लॉ, एंड टू दिस हंगर it has its own conditions, and that is struggle for existence, है ना। तो society is an organism itself. Now next part, when he is saying that the social structure is to understand the concept of social structure, a term used to first denote by the Spencer. So Spencer के हमने 3 स्टेजेस पढ़े थे, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिविस्ट स्टेज। इसमें वो कहते हैं कि स्ट्रक्चर के रूप में सोसाइटी इवॉल्व होती है थियोलॉजिकल स्टेट से मेटाफिजिकल टू पॉजिटिविस्ट। अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं स्पेंसर कि सोशलिस्ट इंडिविजुअल जो है वो इंटरलाइज्ड कर रहा है नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को एंड द वे ऑफ मीनिंगफुल सोशल बिहेवियर। Collectivity of individual is a group and several of them combine together to form a community. बहुत सारे एक साथ combine हो रहे हैं structures, तो क्या बनती है? एक community in the same as बहुत सारे body parts, हाथ है, पाँव है, head है, eyes है, nose है, तो ये क्या बन गई? body बन गई, and that aggregate to communities is called as the society. Aggregation of communities together from society. Now स्पेंसर अपने डायड में क्या कहते हैं? अभी हमने रैडक्लिफ ब्राउन का देखा था डायड, स्पेंसर्स के देखते हैं। So it is his socialized individual which one has the internalized norms and values. So एक सामाजिक व्यक्ति है, इट इज़ अ सोशलाइज्ड इंडिविजुअल जिसको अपने नॉर्म्स पता हैं, रूल्स पता हैं, कर्तव्य और दायित्व पता हैं। ही नोज हिज वैल्यूज़, व्हाट ही शुड फॉलो, व्हाट ही शुड नॉट, एंड मीनिंगफुल ऑफ सोशल बिहेवियर। सो कलेक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल इज अ ग्रुप एंड सेवरल ऑफ देम कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ कम्युनिटी। बहुत सारे ऐसे मिलते हैं तो एक कम्युनिटी बनती है, एंड दे एग्रीगेट कम्युनिटी। ऐसी बहुत सारी कम्युनिटी मिल गई, देन व्हाट दे विल फॉर्म अ सोसाइटी। मेनी कम्युनिटीज टुगेदर फॉर्म सोसाइटी, ठीक है। वेदर दिस कम्युनिटीज बिलोंग टू कास्ट, रिलीजन कम्युनिटी और एनी काइंड ऑफ कम्युनिटीज। So as the case of organism, the society can broken down into communism and which is divided into groups to individual. अब इनको डिसाइफर करना होगा तो कम्युनिटी को हम स्ट्रेटिफिकेशन में बांटेंगे, कास्ट बेस्ड और क्लास बेस्ड। क्लास से इंडिविजुअल तक आ जाएंगे, एंड दैट इज़ एन ऑर्गेनिक एनालॉजी विच इज़ क्वाइट यूजफुल कि हम ऑर्गेनिकली इसे समझते हैं कैसे काम कर रहा है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट एट मेनी लेवल्स। सो सिंगल सेल कैन सर्वाइव, देयर आर ऑर्गेनिज्म विच इज़ मेड ऑफ सिंगल सेल सच एज अमीबा, बट ह्यूमन बॉडी में मेनी काइंड्स ऑफ सेल टुगेदर रहती हैं तो पूरा ह्यूमन बॉडी बनता है। इसे हम बायोलॉजिकली समझेंगे, बट ऑन द इंडिविजुअल कैन सर्वाइव एलोन। द मोस्ट एलिमेंटल यूनिट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इज डायड। सो जो बेसिक जैसे कि बॉडी में एक सेल होती है, मोस्ट एलिमेंटल थिंग इन अ बॉडी इज सेल, उसी प्रकार से एक डायड होता है, मेल और फीमेल, तभी सोसाइटी बन पाएगी। दे विल प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स एंड दे विल रिप्रोड्यूस, रीजनरेट, है ना। जैसे सेल्स
सेल्स में बाइनरी फ्यूजन करते हैं तो दूसरे सेल्स बनाते हैं. In the similar manner, when society will compile together with different forms and structure, they will form dyad first. So the basic unit of society is the dyad. Then comes the Ivan Pitschart, which refers to social structure as a relation between groups, and the contribution of Ivan Pitschart delineates his concept of social structure. द न्यूर्स, उनकी एक बुक आती है न्यूर, वो बहुत फेमस होती है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे और समझेंगे. हमने दो बहुत इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग थिंकर्स को कवर किया यहाँ पे, है ना, AR रैडक्लिफ ब्राउन और हर्बर्ट स्पेंसर को, जो कि सोसाइटी को दो लोगों के बीच बता रहे हैं, डायड एंड द टू. अब हम देखते हैं कि इवान पिट्सचार्ज क्या कहते हैं. इवान पिट्सचार्ज कहते हैं कि न्यूएर सोसाइटी की जब स्टडी होती है तो द टाइम इन स्पेस उनके पैटर्न और लाइवलीहुड को समझने में कंज्यूम होता है. एंड ही एग्जामाइंस टेरिटोरियल सेक्शंस, जो न्यूएर सोसाइटी है उनकी टेरिटरीज रहती है, वहाँ वो हंटिंग करते हैं, वहाँ पर वो मैरिज करते हैं, एंड क्या करते हैं, फॉर्म देयर पावर स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, वहाँ से वो सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी को रिफ्यूट करते हैं. सो न्यूएर इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ स्टेटलेस और एसिफेलस सोसाइटी. स्टेट नहीं है, स्टिल इट इज़ बीइंग गवर्नड by the political heads of their own tribal chiefs. So structure के बारे में क्या कहते हैं? For Pritchard, structure is a combination of group. Structure क्या है? Structure जो है, it is a combination of groups. And that is a concept of segmentary political system, which social order is largely functional to the opposition. यहाँ पे social order कैसा रहता है, opposite में function करता है and balance भी करता है different social sections को, for example backwards, forward, class and class minorities और majorities. इनको बैलेंस करते हुए ये ऑर्गेनाइज्ड कंबाइंड ग्रुप चल रहा है, एंड दैट इज एलिमिनेटेड ओवर टाइम बट ग्रुप्स रिमेन्स द सेम फॉर जनरलाइजेशन एंड जनरेशन ऑफ पीपल पास थ्रू देम. कई पीढ़ियाँ उनके सामने पास होती हैं, जनरेशन्स पास होते हैं. सो इनका ऑर्गेनाइजेशन कॉम्बिनेशन बढ़ते ही जा रहा है, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. सो इंडिविजुअल आते हैं जाते हैं, वो रिक्रूट भी किए जाते हैं और एलिमिनेट भी किए जाते हैं, बट द सोसाइटी हैज़ अ जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर विथ रिमेन्स द कांस्टेंट. ओके, नाउ लेट अस सी द सोशल स्ट्रक्चर इज अ मॉडल. अब पिट्सचार्ज क्या कह रहे हैं, इवान पिट्सचार्ज कह रहे हैं, इनका नाम थोड़ा सा कठिन है. सो पिट्सचार्ज कहते हैं कि सोसाइटी तो ऐसे एग्जिस्ट करती है, बट अब इनके आगे क्रिटिक्स, इसमें कि लेवाई स्ट्रॉस, जिसकी आप जींस पहनते हैं, लेवाइस और एडमंड लीच. तो स्ट्रॉस और लीच क्या बोलेंगे कि प्रोवोकेटिव और डिबेटेबल कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर था ये. इसमें पता चलता है कि इंजीनियस क्रॉस कल्चरल एनालिसिस हो रही है मिथ्स और किनशिप सिस्टम की. मिथ्स क्या है, बिल्ली रास्ता काट गई तो हमें अब नहीं जाना चाहिए, कैट क्रॉस द रोड, डोंट गो. या वुमेन सती प्रथा जो इंडिया में थी, उसमें क्या था मिथ कि अकेली बची लड़की चुड़ैल बन जाएगी और शी विल टर्न टू अ डायन, तो उसको हम बर्न आउट कर देते थे, है ना. तो ये मिथ्स थे, तो इनको रिफ्यूट करेंगे लेवाई स्ट्रॉस और एडमंड लीच, जो कि दिखने को मिल रहे हैं किनशिप स्ट्रक्चर में
सो मिथ्स और किनशिप के बारे में ये रिसर्च करते हैं। आगे हम देखते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म कैसे शो किया जा रहा है इनके द्वारा। सो लेवी स्ट्रॉस कह रहे हैं कि 3 प्रकार के बाइनरी अपोजिट होते हैं जिनमें 3 डिवीजन। सो बाइनरी डिविजन्स की ये बात कर रहे हैं। इन द मिडल ऑफ 20th century that insight has been understood by certain word dependent on the understanding of difference between word and its opposites। तो कैसे होते हैं? अब डायड को ये क्या करेंगे? बाइनरी अपोजिट है ना, कि दैट इज बाइनरी अपोजिट, द प्रोसेस बीइंग कॉल्ड बाइनरी अपोजिट, फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंडिंग द वर्ड coward, that depends on the difference between the word and its opposite idea, that is hero। तो वर्ड और उसका अपोजिट आइडिया क्या है? हीरोइज्म। सोशल वायलेशन क्या होता है? बाइनरी अपोजिट, and that one side of the binary pair is always seen by particular society as culture as more valued over other। so सोसाइटी में जब तक 2 रिलेशन नहीं रहेंगे, मेल और फीमेल, रूलर एंड रूल्ड, स्टूडेंट एंड टीचर, जज एंड लॉयर, so these two binary relations create the whole society in larger perspective when we see that binary pairs always seen in a particular society or a culture, so that value remains the same in every society। okay, so ऐसे ही वो कह रहे हैं कि जैसे कायर रहता है, तो कब कायर है? जब कोई उसे डरा रहा है। एक हीरो है ना, या एक विलन है तभी एक हीरो है, तो दैट इज अगेन बाइनरी स्ट्रक्चर। सो ब्लैक और वाइट फॉर एग्जांपल, सो स्ट्रगल चल रहा है कहाँ? ब्लैक और वाइट, पीस वर्सेस वॉर, डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप, यंग वर्सेस ओल्ड, है ना। यहाँ पे डेमोक्रेट्स हैं, वो डेमोक्रेटिक राइट्स चाहते हैं, वहीं कई सारे कंट्रीज जैसे कि नॉर्थ कोरिया में क्या है? डिक्टेटरशिप इज देयर। Similarly, Germany dictatorship led to World War II. So that is kind of dyadic relationship always. There is protagonist and antagonistic also. So this kind of binary opposites are always existing in society. So Radcliffe Brown is confirming that the structure is observable. The structure which is binary in nature and antagonistic, so ये observable है। A social researcher can get its observation on the basis of these two। For example, friendship versus enmity। so friendship आप देखते हैं larger groups of majoritarian गवर्नमेंट, enmity minorities में enmity चलते रहती हैं, है ना। दलित वर्सेस मुस्लिम्स in the same way। so he is putting forth that the persistence of a structure of a particular society at particular point of time की बात कर रहे हैं, टाइम स्पेस में, किसी काल में, किसी ईयर में कोई घटना बन रही है और वो बाइनरी फॉर्म कर रही है, सो वो एक स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेबल फॉर्म में है, एंड द टाइम एंड प्लेस आर टू बी स्टडीड विद द स्ट्रक्चर द इंटायर ह्यूमन सोसाइटी। सो ह्यूमन सोसाइटी और इसका स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेबल है ना। नाउ लेवाइस स्ट्रॉस मेक्स 3 डिस्टिंक्शन। ये क्या कर रहे हैं? 3 डिस्टिंक्शंस को क्रिएट कर रहे हैं। फर्स्ट, बिटवीन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ मॉडल्स। पहला, एक्सपेरिमेंट करके स्ट्रक्चर्स को इस्टेब्लिश करना कि ये डायड्स हैं कि नहीं, बाइनरी वर्जन है कि नहीं ये, है ना। और एंड experimentation on this model by closely observing their behaviors and their antagonistic relations and the conscious and unconscious character of the model, that is from
लेटेंट एंड मैनिफेस्टेड फंक्शंस, जो कि हम देख रहे थे ना मर्टन में, इसके लेटेंट एंड मैनिफेस्टेड पार्ट्स, कॉन्शियस मतलब कॉन्शियसली इंडिविजुअल कैसे बिहेव कर रहा है अदर कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट, एंड हाउ अनकॉन्शियसली ही इज़ बिहेविंग। फॉर एग्जांपल आप पूछते हो हाउ इज टाइम बाय योर वॉच, तो वो बंदा आपका रिलीजन नहीं देखता है, वो आपकी कास्ट नहीं देखता है, नेशनैलिटी नहीं देखता है, वो सीधे बोलता है इट इज़ 4:30। सो मीड यहाँ पे क्या बोलेंगे, मीड बोलेंगे कि वो बंदा जिसे वो पूछा जा रहा है, द पर्सन ही विल हिमसेल्फ ऑब्जर्व हिमसेल्फ, कि उसने मुझसे ऐसे कैसे पूछा। सो इन दैट वे ही रिप्लाइड टू मीड, बट इन द वे ऑफ लेवाइस स्ट्रॉस he will answer in the time and space condition, unconsciously and consciously. So unconsciously वो बोलेगा कि 12 बज गए हैं, और कॉन्शियसली अगर 4 बजे है तो बोलेगा कि 12 बज गया है, तुम्हारा खराब टाइम शुरू है ना, तो ऐसे बोलते हैं। नाउ थर्ड इज अ मैकेनिकल एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल। अब ये फिर साइंटिफिक मॉडल पे आ रहे हैं कि सोसाइटी में जो बाइनरी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं वो मैकेनिकल बेसिस पे हैं, मैकेनाइज्ड हैं, एंड ऑल्सो स्टैटिक्स बेस्ड। देयर आर ऑब्जर्वेबल डेटास, जिसके बेसिस पे वो उसको कोट कर रहे हैं दैट दीज आर प्रेजेंट। So observable and social relations and the construction of the models after these facts need to distinguish from the experiments on the models। तो ये कैसे इन्होंने पता किया लेवाई स्ट्रॉस ने, बाय फॉलोइंग कंटिन्यूअस एक्सपेरिमेंट्स। अब थोड़ा सा हम समझते हैं कॉन्शियस और अनकॉन्शियस मॉडल को, ठीक है। सो कॉन्शियस मॉडल्स are the inside models in terms of norms, rules, regulations, laws, है ना। अब ये भी बाइनरी हो गए, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। सो conscious model are called as home based model. For example, norms, rule and regulation for a boy is different, but a girl in the same family, एक ही family है, but the model is for boy is different, the girl it is different. So it is conscious, binary and unconscious when we see the deeper structure of it. तो हम अनकॉन्शियस मॉडल में देखते हैं कि वो डायरेक्टली इसको परसीव नहीं करती है, बट वो हेजीमनी इस्टेब्लिश कर रही है बॉय की चाइल्डहुड से ही इन अ पैट्रियार्कल सोसाइटी। सिमिलरली इन अ मैट्रियार्कल सोसाइटी, मैटरनल डोमिनेंट, गर्ल की हेजीमनी हो जाएगी, उसको इम्पॉर्टेंट वर्क्स दिए जाएंगे, उसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा मिलेगी, he will provided more reward, and girls को punish किया जाएगा, so reward and punishment will be there in same way that will grow unconsciously and enmity unconsciously generate हो जाएगी। so antagonism आ गया यहाँ पे। now let us see some questions, of mains as well as prelims also। so ये prelims point of view के question है, which was of following were not direct cause of decline of British village artisan industries, which sociologists coined the concept social relationship to describe patterns of human interaction। so pattern behavior कौन दे रहे हैं, Weber and Parsons। so intention, meaning and symbol। now let us discuss some of the questions for mains। तो ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, explain the concept of dyad, explain binary relationship
society, explain antagonism present universally in every society. Explain evolutionary theory of स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर की इवोल्यूशनरी थ्योरी है. कंसेप्ट ऑफ डायड, रैडक्लिफ ब्राउन कैसे बता रहे हैं आपको. सो नाउ यू हैव टू स्ट्रक्चराइज द आंसर. हम देखते हैं कि स्ट्रक्चराइज कैसे करते हैं. हाउ टू स्ट्रक्चराइज आंसर. सो सपोज करिए ये क्वेश्चन आ गया, इवोल्यूशन ऑफ स्पेंसर. सो आप इंट्रो में लिखेंगे कि डार्विनिज्म प्री एग्जिस्टेड. आप पहले डिफाइन करेंगे कैसे डार्विनिज्म चल रहा था ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ में. सो प्रीसीडिंग इट टू अ नेक्स्ट स्टेज, स्पेंसर ब्रॉट theory of survival of fittest and theory of natural selection. So now आप सब डायमेंशन ऐड करोगे कि हाउ डार्विन was leading this theory. Functions of evolution क्या है. evolution से आपको what sociology gets out of this theory. Again another sub dimension, what is the impact on researcher. कैसे इसने मॉडर्न रिसर्च को और सुटेबल बनाया. यू विल कोट विथ मोर एग्जांपल्स. रिसर्च मेथोडोलॉजी बिकम मोर biologically oriented rather socially oriented. Then conclude beautifully. Either you can conclude critically or you can conclude also with different points. So that depends on your choice. So I hope you understand this class very well. You are making notes out of it and you are practicing hard for your success. So I believe you should get most of it. See you in the next class. Thank you and have a nice day. Jai Hind, Jai